Hello guys, Navneet here, back with another fragrance review. In today's video, we are going to talk about a fragrance from the brand Versace. So Versace सुनते ही video skip मत कर देना. Before we go to the intro, all thanks to Anurag bhai for this intro. I think brilliant work, very creative. Thank you so much again. And let's start the review after this intro. And when we talk about entry level, कोई भी ब्रांड में अगर आप कोई भी लग्जरियस ब्रांड में बात करोगे तो a lot of people talk about entry level. So entry level परफ्यूम के लिए एक अच्छा फ्रेग्रेंस हो सकता है. So for guys who are trying to enter Versace for the very first time, who are trying to explore Versace fragrances, this could be the entry level fragrance for you, because not only is it cheap but could also be one of the fragrances you actually fall in love with. So ऐसा एक fragrance है दोस्तों, and the fragrance I'm talking about is Versace Blue Jeans. Now blue jeans and red jeans are two of the fragrances. One is red jeans is for women and blue jeans is for man. So blue jeans जो fragrance है दोस्तों, I think it comes very subtle, बहुत ही एक subtle fragrance है, very clean, fresh fragrance. So it falls in the category of aromatic fougere fragrances. The thing which you love about this fragrance is that it comes under the price range of 3500. That's it. So any fragrance of Versace, मतलब अगर आपको सेल पे अगर आप खरीद लो नायका से पार्कोस, you can even get it for as low as 2300, because I bought it for 2450. So 2450 में मैंने खरीदा था ये fragrance and has to be the best buy for me. And the box of the fragrance is very vintage premium, एक premium vintage feel देता है आपको, and you get that Versace logo with the blue jeans, and there you can see this is an EDT concentration, so ज़्यादा strong नहीं है, but still this is 75 ml. So yes, आपका 75 ml का fragrance मिलेगा आपको. And the box of the fragrance is quite simple, but this is a metallic box, and this has quite a good cushioning according to the price. And then again I find this box to be very vintage, काफ़ी एक premium feel है but एक vintage feel है, and you might even feel that from the bottle itself. So the bottle of the fragrance has that Versace logo, and Versace logo के अलावा इसमें आप देख सकते हो, you can also see the border line of Versace से उन्होंने डेकोरेट किया है. काफ़ी एक प्रीमियम प्लश बॉटल है, and simple, sophisticated yet, and काफ़ी clean fragrance. Let's talk about the juice inside the fragrance. So juice जो है इस fragrance का, that is something unique. So this could be one good fragrance if you are into the early 20s or let's say till the age of 30. उसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा उन लोगों को जो शौकीन हैं काफ़ी strong fragrances को, because this is not actually a very strong fragrance. काफ़ी एक लाइट, एक फ्रेश फ्रेग्रेंस है, एंड एरोमा ऐड करता है रूम में. सो यू माइट बी नोटिसेबल इन द रूम, बट डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी वेरी सुपर स्ट्रॉन्ग. सो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट स्टिल आई लाइक द फ्रेग्रेंस. इट इज़ काइंड ऑफ वेरी फिजी, काफ़ी एक प्लेफुल फ्रेग्रेंस है. एंड बाई व्हाट आई मीन बाई प्लेफुल इज दैट द नोट्स ऑफ द फ्रेग्रेंस आर वेरी यंग लाइक. सो यंग लाइक में आप एक्सपेक्ट करो इस फ्रेग्रेंस को टू बी लाइक in the category of Nautica Voyage. So fresh fragrance है, and it falls with the category of fragrances like Nautica Voyage, fragrances like Versace Perfume, and ये सब fragrances category में fall करता है. तो काफ़ी एक light fragrance है, and does not fall in the category of Middle Eastern fragrances. And notes of the fragrance are quite unique, and it can be a bit metallic. बहुत लोग बोलते हैं कि इसके notes काफ़ी metallic हैं, and a few don't even like this fragrance. But for me, I find this fragrance to be one of the fragrance when I want something unique. So अगर आपको कुछ unique चाहिए, Blue Jeans is the fragrance you go to. The bottle itself feels so unique. It reminds me of the Coca-Cola bottle we used to have, right, when we were kids. So उसी का एक miniature version है, and the atomizer is quite good. ज़्यादा खर्चा नहीं किया उन्होंने. They have given a plastic cap, and the cap is good. But that is a plastic cap again, and the bottle is good. I think it's overall it is a value for the money. It's a bang for the buck kind of product. And जो परफॉर्मेंस इस फ्रेग्रेंस की अच्छी है. नॉट ओनली मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि एंट्री लेवल में आपको लगेगा कि इस फ्रेग्रेंस के परफॉर्मेंस में कुछ है इश्यूज. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों. दिस इज अ 75 ml फ्रेग्रेंस. सो लॉन्गिटिविटी काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू एन EDT. सो EDP जैसी परफॉर्मेंस नहीं है इसकी. इट इज़ नॉट दैट कंसनट्रेटेड, नॉट दैट थिक, बट स्टिल अच्छा परफॉर्मेंस है. आपको 7 से 8 घंटे की परफॉर्मेंस देगा. लॉन्गिटिविटी इस फ्रेग्रेंस की 7 से 8 घंटे, जैसे मैंने बोला. एंड प्रोजेक्शन ऑफ फ्रेग्रेंस इज क्वाइट गुड इन द स्टार्ट. बहुत ही अच्छा प्रोजेक्शन है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं 30-45 मिनट्स के बाद इसका प्रोजेक्शन फेड अवे कर जाता है. सो नॉट वेरी क्लोज टू द स्किन, बट उतना स्ट्रॉन्ग एंड प्रोमिनेंट नहीं रहता. पीपल वंडरिंग वेदर दिस इज द न्यू फ्रेग्रेंस. नो, दिस इज नॉट अ वेरी न्यू फ्रेग्रेंस. दिस वाज एक्चुअली लॉन्च्ड इन द ईयर 1994. And let's talk about the notes of the fragrance. So the notes of the fragrance are citrus, bergamot, juniper, anise, Brazilian rosewood, basil. That are the top notes of the fragrance. The middle notes are lavender, rose, carnation, heliotrope. So
लेट मी सिंप्लीफाई इट टू यू. आपको टॉप में मुझे लगता है मेरे हिसाब से you'll get a lot of citrus bergamot, you'll get some amount of anise which adds that what can you say, a very different balsamic note to the overall fragrance and थोड़ा spicy बनाता है उसे. And apart from that you'll get a heavy rush of geranium. So geranium की वजह से थोड़ा freshness है इस fragrance में, very clean. जैसे कि आप आई couldn't be comparing this but clean as in अगर आप कोई होटल के 5-star hotels resorts ये सब में आप जाओगे, you will feel that the washroom kind of smells very clean, right? So this is actually a very clean fragrance, falls in the category of clean fragrances for me. This is not under a very fresh category fragrance. Aromatic fougere जैसे मैंने starting में बोला था. And the base of the fragrance has a lot of cedar, amber and patchouli. So apart from that I think they have added iris but उतना prominent note नहीं है, because overall I think इतने सारे notes, इतने सारे इन्होंने elements डाले इस fragrance में, that notes becomes very complicated. But still I love this fragrance. Good entry level fragrances. I would want all of the teenagers to try this fragrance. If you're trying to go for Versace for the very first time, you are very skeptical as to what fragrance should I get, what fragrance should I not. I think that this will be the first fragrance you will buy, but you will remember this for a lifetime. Maybe अगर आप future में you will buy better fragrances, you will buy fragrances from Tom Ford, you will switch to Creed. बट स्टार्टिंग में जो पहला फ्रेग्रेंस आपका होता है वो फ्रेग्रेंस आपके माइंड में रह जाता है, जैसे मेरे लिए है वर्साचे पर होम. सो वैसे ही ब्लू जीन्स भी एक अच्छा फ्रेग्रेंस है. यू कैन स्टार्ट विद दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. यू कैन कलेक्ट दिस, यू कैन एक्चुअली कलेक्ट दिस, मतलब कलेक्टर हो अगर आप, यू कैन एक्चुअली, आई थिंक मोस्ट ऑफ द कलेक्टर्स ऑलरेडी हैव दिस फ्रेग्रेंस. इफ यू स्टार्टिंग अ परफ्यूम कलेक्शन एंड यू वांट अ फ्रेग्रेंस for the very a designer fragrance from Versace, अच्छा एक choice है blue jeans for men, and for women also red jeans is a spectacular awesome fragrance, but not a fragrance which I would recommend for men. And that being said, I think this video sums up here. Signing off, Navneet. I hope all of you have a good day ahead.